और हमने पढ़ी है, हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डील कर रहे हैं। व्हाट डज द नाइट मेल ब्रिंग? नाइट मेल क्या लाती है? इट ब्रिंग्स चेक्स, पोस्टल ऑर्डर्स एंड लेटर्स फॉर द पीपल ऑफ ऑल क्लासेस। इसको एमसीक्यूज में भी डाला जा सकता है इन तीन में से किसी एक को मिस करके। What is the reaction of birds on the arrival of night mail? जब नाइट मेल पहुंचती है, हमने पढ़ा था turn their heads from, तो वहां पर अगर आपको याद हो तो क्या कैसे रिएक्ट करते हैं? The birds turn their heads to see the night mail. They keep sitting in their nest. They are habitual and do not afraid of it at all. What is the effect of night mail on the life in the form? फॉर्म में जो जिंदगी उस पर इसका कैसा इफेक्ट होता है? नाइट मेल does not disturb the life in the forms. The people and animals in the farm know well of it. They are now familiar to the coach, so they just keep on with their work when she passes on. उसने कहा था with the pass across, they keep on slumbering. वो सोते रहते हैं डॉग, जो sheep dogs वगैरह हैं. What is the reaction of sheep and dog on the arrival of the night mail? नाइट मेल की अराइवल पर sheep dogs का क्या रिएक्शन होता है? The sheep dogs do not bother to look at the train when she passes. They just keep sleeping with their heads and paws across. From where does night mail pass? Night mail कहाँ से गुजरती है? She passes from the plains and the hills. She passes from the farms and cotton fields. They also passes from moorland and the miles of fields of wind-bent grass. ये पूरी एक उसने सीनरी पैनोरामा ऑफ नेचर डिस्कस किया हुआ है। What is the theme of the poem? नाइट मेल का थीम क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये जो थीम्स हैं ये आमतौर पर आप कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। थीम्स याद कीजिए, आप इन्हें कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ कीजिए, थीम के क्वेश्चन पे भी, बट मैसेज मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम थीम। मैसेज है जो वो इंटेंट पार्ट है उसका प्रीचिंग पार्ट है। व्हाट हैज़ बीन सेड इज द थीम एंड हाउ एंड व्हाई हैज़ बीन सेड इज द मैसेज। से द थीम इज द ब्यूटिफुल जर्नी ऑफ द नाइट मेल एंड हाउ इट डिलीवर्स टू द पीपल। It brings different types of mail. It delivers the letters to everyone, whether rich or poor, or it travels through the different lands. सारी जगहों से गुजरती है, मुख्तलिफ तरह के लोगों के लिए वो मेल मटीरियल लेके आती है। It is very prompt. It creates great noise, but does not disturb the life of animals and human beings. आंसर थोड़ा लंबा है, मटीरियल आपको ज़्यादा दिया गया है, वहाँ आपको 4 to 5 सेंटेंसेस या 4 to 5 लाइन्स में लिखना है, तो आप इसमें से क्रॉप करके कुछ चीज़ें शंट कर सकते हैं।